Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, in this lecture we will continue the discussion of important 2 marks questions that we have started in the previous lecture. Okay, so let's start with that. What is the role of enzyme ligase in genetic engineering? So as we all know, in genetic engineering, restriction and ligase enzyme, they have a very important role. Restriction endonuclease कट करने का काम करता है at the specific site, and enzyme ligase it acts as a molecular suture which help in joining the two pieces of DNA. ठीक है, दो pieces जो DNA के हमने कट किए हैं, तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हमने कट किया, तो उसको वहाँ पे ज्वाइन करता है प्लाज्मिड में, ओके, इन ऑर्डर टू फॉर्म द रिकॉम्बिनेंट DNA. The joining process requires ATP as it derives energy to construct phosphodiester bond between cohesive ends. So for this, the ATP is required in order to construct the phosphodiester bonds जहाँ पे join करते हैं दोनों ends. So these ends they join through via phosphodiester bond and it requires energy. Now next question है explain PCR, expand PCR and explain. So PCR it stands for polymerase chain reaction. Now this technique is used for the amplification of gene of interest or to obtain multiple copies of DNA of interest. जो भी हमारा gene of interest है, ठीक है, उसको हमें एम्पलीफाई करना है, बड़ा करना है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ कॉपीज. सो दैट इज डन बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. सो द पीसीआर इट रिक्वायर्स अ प्राइमर इन ऑर्डर टू स्टार्ट. कहाँ से वो स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा, तो प्राइमर हेल्प करता है. देन टैक पॉलीमरेज जो कि थर्मोस्टेबल इंजाइम है, हम कह सकते हैं, जो कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से ये डिराइव होता है. टैक पॉलीमरेज target sequence, DNA sample and deoxynucleotides. Now this PCR includes number of cycle for amplifying DNA of interest in vitro. That means it is done in a chamber. एक controlled condition में ये चीज़ सब कुछ किया जाता है. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं. व्हाट इज बायोरिएक्टर? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर ओवर शेक फ्लास्क? नाउ बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? दे आर द लार्ज वेसल्स, कंटेनर्स होते हैं बड़े बड़े, in which raw material are biological converted into specific protein using microbial, plant, animal और human cell. ठीक है, जहाँ पे ये सब रिएक्शन किया जाता है, दैट इज़ द बायो रिएक्टर्स. अब दो तरह के बायो रिएक्टर्स होते हैं. एक स्टीयर्ड टैंक बायो रिएक्टर एंड द अदर वन इज शेक फ्लास्क बायो रिएक्टर. Now, the stirred tank bioreactor, it has more advantage over this second type. So why? Because it provide optimal condition for achieving desired product by providing optimum growth conditions. Because it provides all the optimum condition required for the growth, that is temperature, pH and everything. Next, small volume of culture can be withdrawn periodically from bioreactor to test the sample. Okay, small amount of बिल्कुल बहुत छोटा सा अमाउंट कल्चर का इट कैन बी टेकन आउट, ओके, बीच बीच में इन ऑर्डर टू चेक द सैम्पल कि हमारा जो जिसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कि नहीं. तो बीच बीच में आप उसको चेकिंग भी कर सकते हो, टेस्ट भी कर सकते हो. एंड द लास्ट इज इट हैज़ एन एजिटेशन सिस्टम, temperature control system from control system and pH control system. So this is also well developed in stirred tank bioreactor. Now next question is how is gene Z used as marker? So I hope you all remember the lac operon. lac operon हमने पढ़ा था, उसमें Z जीन था. स्ट्रक्चरल जीन्स की जब हमने बात की थी तो Z जीन था, एंड दैट लैक Z जीन इट कोड्स फॉर द एंजाइम का नाम क्या था? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. So if the recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta B galactosidase, this results into inactivation of enzyme. ठीक है, enzyme inactivate हो जाएगा. The bacterial colony whose plasmid does not have an insert produce blue color, but those with an insert do not produce any color.
ओके, हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इंजाइम जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। ओके, एंड द बैक्टीरियल कॉलोनी हुज प्लाज्मिड डज नॉट हैव एन इंसर्ट, जिसमें नहीं होगा, मीन्स जिसमें या तो हम कह सकते हैं कि इंजाइम इनएक्टिवेट नहीं हुआ होगा, उसमें आपको ब्लू कॉलोनीज मिलेंगी, अदरवाइज जो है कलरलेस आपको मिलेगा। नेक्स्ट, the following protein of the given molecular weight are subjected to gel electrophoresis. What is the order of sequence in which these proteins are isolated in the gel? Now these are few proteins given just for an example, and you can see the molecular weight also. अब आपको बताना है किस ऑर्डर में ये प्रोटीन आइसोलेट होंगी जेल से। ठीक है, एग्रोस जेल से जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे तो आपको पता है इन द सीक्वेंस ऑफ देयर साइज वो हमें मिलते जाते हैं डीएनए स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका है, मायोसिन का है। तो सबसे पहले हमें किसका स्ट्रैंड मिलेगा, मायोसिन, फिर इंसुलिन, देन हीमोग्लोबिन, देन राइबोजाइम, then keratin, and lastly you will get albumin. So this is the order of the protein obtained from top to bottom in the gel. So ये सबसे बड़ा strand होगा and this will be the smallest one. Next, question number 6. What are the two basic techniques involved in modern biotechnology? So the basic techniques involved in biotechnology, it is your genetic engineering, okay, in which the technique of altering the nature of genetic material or introduction of it into another host organism to change its phenotype. जिसमें हम क्या करते हैं, ऑल्टर कर देते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप, और उसके बाद जो है उसको होस्ट में डाल दिया जाता है, दैट ऑल्टर्ड जीन, इन ऑर्डर टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ दैट होस्ट। जिस भी पर्टिकुलर जीन को हमने ऑल्टर किया है वो जीन जो है होस्ट में जब हम डालेंगे तो वो हमें वैसा ही फिनोटाइप शो करेगा। नेक्स्ट है टेक्निक्स टू फैसिलिटेट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब्स और सेल इन लार्ज नंबर अंडर स्टेराइल कंडीशन। स्टेराइल कंडीशंस मीन्स कि हमें जो है ऐसी कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती हैं जिससे कि जो भी हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, वही जो है मीन्स जो भी हमारा जिसके लिए हमने पूरे एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी हमें जीन को ऑल्टर कराना है, हमको वही डिज़ायर्ड जीन जो है हमें ऑल्टरेशन फॉर्म में दिखना चाहिए। ओके, सो इस तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करना जो सेकंड टेक्निक है। नेक्स्ट, ओके, now this is all. With this we are finishing with the 2 marks questions. Now next lecture we will be taking up the 3 marks questions. So this is all student. Thank you everyone.